Okay, open your eyes now. Open your eyes. How many of you could remember it? You could not remember? You could not remember? This girl? No, actually, I never faced any situation like this. You tell me. I'm forgetting your name. Vishal. Vaishali, go ahead. क्या हुआ था? So once I was like 8 years old, so I saw like there were kids in a like it was a river kind of thing in our village. So I saw the kids were jumping from a place in the river, and I didn't need swimming at all. So I thought that I should also do that. But like it's feeling a kind of giving them joy. They were very much enjoying it, and I didn't even knew swimming anything of that. I've never been into a river or anything. So I went there and jumped. So it was very badly. I was going up and down, and then someone saved me. Someone came and holded me, and then came. He dropped me to shore. Do you remember the date? No, sir. Age? Yes, 8 years old. And month? No, sir. What else do you remember about it? So the place, the people, The and clothes how. that you were wearing? No, sir. The person who pulled you out, do you remember him? No, sir. I was very in a very bad condition, Mm-hmm. but I knew someone holding me and dropped me to the shore. Do you remember that entire sequence of Yes, jumping? going up and down, and the way I was feeling breathless, it was very scary. Very scary. Almost touched death and came. Yes. Anyone else? You? Sir, मेरा तो recently है. Hmm. Recently I was benching 120 kgs. Then my supporter was wearing headphones, so he was not able to listen when I was screaming. So 120 kgs was on my chest, and I was helpless. So basically, what I did was on the bench, I rolled it down, rolled it down, rolled it down. Then it came here on the thighs. Then I get up. It was my face became very red. I was exhausted very much. Which was the year? Sir, recently, 2 weeks, 2 week पहले. You could remember something? Yes, sir. I remembered. So I remembered that when I was in childhood, and then I went to Haridwar and with my parents and some other people of village. And at that time, I used to walk in Ganga river, and when I went into the water, and then the flow of river was very high, and then and at that point of time I was about to flow in the river. So at Someone that, hold you? yes. So, This was which year? So my father knows swimming, so He pulled you. yes. कौन से साल में? So at that time I was 7 years old. Anyone else would like to do? Ah. Yeah, so sir, after my class 12, so I went for a camping. So in the meantime, like I entered the college. So I went to camping in Nagpur for about 15-20 days. So there was a swimming pool there. So that's a full-fledged swimming pool. So I don't know actually before that I don't know swimming. So I just went there. So like I disbalanced myself and I just fell into that. So It was a deep side? yeah, it was like up to my height. At that time I was around 5'6", somewhere. 5 feet 6 inches. So I just went, so like someone rescued me from there. So that was like where like I was in fear for almost for a month. From water. It was there with you. You kept failing. Anyone else? Ah. Sir, it was an accident in my class 10. I was coming from teaching my friend a topic at her house, at his house, and we were coming back. He was give a lift to me to my house. We are on a bullet. He was riding, and one sitting in middle, and I was the last seater. And there was a narrow gully in which there is a pillar in between the road. So I don't know what happened. The bullet was in speed, so it hit someone. Leg was hit by the pillar, and we all fell down. And my head struck to the road, and I was like that. Get up, Harsh. What happened to you? My body doesn't responding me, but my brain was working. I just remember that get up,
खड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ. And my body isn't helping me out. And sometime auntie was there who helped me to get up. And just I get up little. My head is bleeding. Tap tap tap. The blood was dripping. And I was like, I am fine. Nothing has happened to me. And a bhaiya came to me, and he see that there is a big cut was there, and auntie gave a napkin or something. You remember the face of the auntie? No sir, I couldn't see her. You can go and meet her back. No sir, never I had the chance to meet her. So she gave me something to tie my head, and my friend take me to the hospital. And where the hospital guy asked me after sending me to the hospital, they both go to his house to get some money or something for that. So the compounder asked me, will they come to check you? Yeah, they will come. He was worried for his peace like that. Good to see. The idea of this exercise is to make you realize that if you try to remember, you will remember. Yes. The events which are there in your heart, which are there in your unconscious mind, if I am telling you to remember it, you will remember it. Got the point? Yes, sir. And you will remember in every detail, like as if it happened yesterday. Whereas if I ask you what was the breakfast last Tuesday, you may not be able to remember. Why? Because it's not an event which has left any mark on your heart. So all these events which has happened, which has stayed in your unconscious mind, you can always reach them. You can always. तो वो एक गाना भी है कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी. थोड़ा रोमांटिक टाइप का है, सैड है बंदा, बदली छोटी चली गई. तो कह रहे करो याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर नहीं कुछ ठहर जाएगी. कहानी नहीं बट कुछ ठहर जाएगी. कहने का मतलब है if you try to remember. बस इसी को हमने यूज किया है थीमेटिक एक्सेप्शन. हमने क्या किया है? हमने आपको पिक्चर दिखाई है ताकि आपके अंदर एक ट्रिगर. तो हम क्या बोलते हैं कि 30 सेकंड के लिए इस पिक्चर को देखो और सोचो, कंसंट्रेट करो. मैंने भी तो 30 सेकंड ही बोला था, है ना? 30 सेकंड के लिए जब तुम बोलोगे, देखोगे, कंसंट्रेट करोगे, तो करोगे याद तो हर बात याद. सारी बातें जैसे कल की हो. और कैसी बातें याद आएंगी? उस पिक्चर से रिलेटेड बातें ही याद आएंगी. ऐसा नहीं कि वो पिक्चर माउंट आबू का है और तुम्हें शिमला याद आएगा. ऐसा नहीं होगा. इट विल कोरिलेट विद दैट picture. Got the point? Yes, sir. Yes, sir. Got the point? Yes, sir. That is what the power of unconscious mind is. That is what the power of. So now the question that will come to your mind कि सर अगर ऐसा है, अगर unconscious mind में जो है और वही बाहर आएगा, तो हम करें क्या? क्या करें? बताओ. क्या करें? क्योंकि अगर मान लो अनकॉन्शियस माइंड में सारे रिजेक्शंस ही हैं, तो सारी स्टोरी मेरी रिजेक्शन से ही भर जाएगी. सारे अगर फेलियर्स ही भरे हैं, तो सब जगह फेलियर ही लिखूंगा. तो मैं क्या करूं? But new thoughts will So come. behavior change. पहली बात बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली. तो जो मैंने कल तुम्हें बोला था, अब तुम ज्यादा कोरिलेट करोगे इससे कि ओपन योरसेल्फ टू न्यू एक्सपीरियंसेस. ये नहीं कि तुम बस वही पुरानी घिसी पिटी यादों के साथ राजेश खन्ना बन के जीवन निकाल दो. समझ में आ रहा है? बनना है तो टॉम क्रूज बनो. क्यों? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? देवदास नहीं बनना है. Block lesson. तू मेरा कौन सा है वो शायरी की शेर है. तू मेरा नहीं, तेरा इश्क मेरी नहीं, तेरा इश्क मेरा शौक है, आदत नहीं. तू नहीं,
कोई और सही। हाँ कोई और तू नहीं तू नहीं अगर कोई और सही कोई और सही। कोई और नहीं बहुत लंबी है मतलब ये नहीं है कि भैया तेरे लिए मैं जान दे दूंगी या दूंगा ना, नो, तू नहीं तो कोई और सही। इसी को तो हम आजकल के जमाने में बोलते हैं मूव ऑन। करेक्ट कार्तिक, मूव ऑन। कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही। बहुत लंबा जाएगी मिलेंगे लाख तू नहीं तो कोई और सही। कौन नहीं जमाने, बोलो बोलो अनुरोध बोलो, तुम तो शायर निकले। बोलो इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। इस जमाने में बस बस यही मंत्र है जीवन का। होल्ड ऑन नहीं करना है पास्ट को होल्ड ऑन नहीं करना है। फ्यूचर में जाना है। तू नहीं कोई और सही। कोई और नहीं इस जमाने में सनम तू क्या हंसी नहीं, अकेली तो नहीं। मतलब लड़कियों के लिए हम हंसी की जगह कुछ और शब्द यूज कर लेंगे, राइट? समझ में आया? अपनी लाइफ का वैल्यू समझना है भाई। ये नहीं कि तेरे लिए मैं जान दे दूंगा, देवदास बन जाऊंगा, दारू पीता रहूंगा। नो वे, कम ऑन, मूव ऑन। ठीक है? इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेके आओ। नहीं हुआ किसी एग्जाम में, मूव ऑन। ठीक है? कहीं फेलियर लगा, असफलता हाथ हुई, मूव ऑन। तू जमाने में एक ही हंसी थोड़े ना, तू बहुत है। समझ में आ रहा है? दिस एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू इज open yourself to experiences, is let the new ideas come, generate, let your unconscious mind keep filling, your mind will be having a lot of subconscious mind be filled with lot of ideas. You are not restricted to just old past. You should experiment with life, you know. Some people say कि हमारे जमाने का म्यूजिक तो बड़ा अच्छा था. That person is stuck in the past. Look ahead. ये म्यूजिक भी अच्छा है. इसमें कितने खूबसूरत गाने बना रहे हैं लोग. तो वो स्टक इन द पास्ट नहीं करेगा कि मैं एम्बेसडर ही चलाऊंगा, ऐसा नहीं है। मर्सिडीज आ गई है, लुक फॉर दैट, था चल रही है। गेटिंग माय पॉइंट? लुक फॉरवर्ड टू लाइफ। Sir, you mean to say that with these experiences we can develop our story. You will add lot of new ideas to your unconscious mind, to your subconscious mind, and if there are lot of ideas, then I'll cover how to that part we will cover a little later. But add. Your job is to add. Okay. समझ में आया? तुम्हारे भी दिल टूटा है क्या? दिल टूटा है कभी? लग रहा है? No, sir. कि you can be honest. This is a very honest class. No, sir. ये ज़्यादा सीरियस मैटर है ये। थोड़ा है। फिर तुम वो वाला शर्ट में हैंगर में लटका हुआ है। समझ में आ रहा है? तो open yourself to experiences. Please don't Limit yourself. learn. Do not stop learning. Do not stop adding new experiences, ideas, meeting people, generating thoughts. It's very essential. Got it? Yes, sir. Second also, same. Let it go, or let that be. जाने दो पुरानी यादों को, पुराने फेलियर्स को जाने दो। समझ में आया? अब कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं, जैसे आपके बहुत किसी क्लोज बंदे का मान लो डेथ हो गया, तो आप उनको नहीं जाने दोगे। वो है, सच है। उसको अपने साथ सम्मिलित कर लो, उसके साथ एक दोस्ती कर लो। सो लेट दैट बी। मैं एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देख रहा था यश बिरला का, इज अ वेरी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट। यश बिरला, वेरी स्टाइलिश पर्सन, ही वेयर्स लॉट ऑफ फैंसी क्लोथ्स। कभी उनकी वीडियोस देखना। तो वो अपनी कहानी सुना रहे थे किसी चैनल पे। व्हाट हैपेंड इज हिज ब्रदर, देयर वर 4 of them, मदर, फादर, सिस्टर एंड ही, 4. He was in America, so these 3 people were traveling in a flight and that flight crashed. So all 3 of them died. His father, very famous industrialist, I'm forgetting his name. So he said, for 1 year,
I was alone in this house. For 1 year, I had no one to talk to, and I was in total trauma. But then after that, I realized it's not the way. So I made peace with it. And now what I remember is good memories. Are you getting my point? What I'm saying? कि you let it go. तो वो तो हो गया फालतू चीजें. क्लास में जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया आउट, ठीक है? पर कुछ ऐसी यादें हैं जो आपसे बहुत क्लोज लोग रहे हैं, मान लो वो किसी कारण से आपके साथ नहीं है, तो उनके साथ पीस, having accepting, ठीक है? Now remember the good things and don't let it haunt you, let it feel good. तो यादें आपको दो तरह से अफेक्ट कर सकती हैं, एक तो आपको हॉन्ट कर सकती हैं और एक आपको बहुत अच्छा महसूस करा सकती है। तो आप अच्छा महसूस कीजिए, उन मेमोरीज को याद कीजिए। समझ में आया? मान लो कोई आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपको देख के मुझे ही याद आ रहा तो अब ऐसा भी तो रहा होगा ना कि देयर वाज अ पीरियड व्हेन पीपल रियली हैड अ गुड टाइम, है ना? उन यादों को छोड़ के चली गई तो उसको भूल, कोई बात नहीं, समझ लो एक्सीडेंट हो गया उसका, समझ में आया? लेट इट गो एंड लेट दैट बी, ठीक है? देन व्हाट इज द थर्ड थिंग? एनीवन? Third thing, what can be? If you want to clean the system, what can be the third thing? Basically, हमें अपने unconscious को See positivity. Try to see the things in a positive way. Include new facts. Trial and error. Change perspective. Love you with love. love thyself. Have you heard this phrase? Yes, sir. Something like this, love thyself. Check on Google. Love thyself means what? Love yourself. Yes, sir. Up, you should always consider that you are the only brand ambassador. तुम्हारा कोई फ्रेंचाइजी है नहीं, ना तुमने किसी को हायर किया है, समझ में आ रहा है? You are the only one for this brand. You are the only brand ambassador. तो अपने आप से, अब जब मैं कह रहा हूँ अपने आप से मोहब्बत, इसमें दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट जो मैं पहले तुमको समझा रहा था, सेल्फ स्टीम, है ना? No, allowing yourself that honor, that no one else should, make me feel bad. Feeling great about yourself. If you have seen this movie, Jab We Met, so what does she say? Kareena Kapoor? अपने फेवरेट आपको अपने बारे में, जब अपने बारे में आप सोचें और जब आप अपने बारे में ऐसे थोड़ा सा आप आंखें बंद करें तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। समझ में आ रहा है? अगर आप ही अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप ही अपने आप को दबा कुचला गरीब मनोज कुमार समझेंगे, आप वैसे ही आपको, एक रामायण की बहुत अच्छी चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी पर मुहूर्त देखे होंगे। बहुत बढ़िया। आई एम रियली लाइकिंग योर दिस शायरी एंड नॉलेज। तो व्हाट ही सेज इज, अनुरोध, क्या मतलब है इसका? जिसकी जैसे जैसे हम सोचेंगे वैसा ही जागी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी दिन तैसी। हरि मतलब भगवान, भगवान की मूर्ति। कोई कहेगा क्या है, ये तो मूर्ति है, तो ये उसकी भावना है, ये मूर्ति ने नहीं बोला उसको, मूर्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। श्योर प्रॉब्लम। कई लोग अयोध्या में गए, अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति को देखी, कई लोगों को सच में they were so moved emotionally that they were crying. Why were they crying? Because they saw God there. So God was not telling you I am there. It was your feeling, it was making you feel yes, this is how Lord Rama should be. That feeling from inside. Getting the point? Yes, sir. आप जैसी भावना रखोगे, हरि की जो मूर्ति है, हरि मतलब भगवान की मूर्ति, वैसी दिखेगी। तो what matters is कि how you are looking at it. Getting the point? Yes, sir.
अब अगर आप TAT से इसको कंपेयर करो, थीमेटिक एप्रिसिएशन से, वो पिक्चर आप देख रहे हो, जाकी रही भावना जैसी हरी मुहूर्त देखी थी, जैसी तुम्हारी भावना होगी वो पिक्चर वैसी दिखाई देगी। तो अगर भावनाओं में आक्रोश है, गुस्सा है, अपने प्रति सम्मान नहीं है, अपने प्रति एक सेंस ऑफ लॉस है, सेंस ऑफ लो फीलिंग है, लो स्टीम है, आपको वैसा ही दिखे। तो पिक्चर लिखना कोई आर्ट नहीं है, आर्ट है ये। आर्ट क्या है? हाउ यू feel amazing about yourself. How you, if you feel amazing about yourself, you feel amazing about everyone, others. It's natural. मैं फिर से वही रोटी कपड़ा और मकान में ले जाऊँ तुम्हें, तो वो मनोज कुमार को हर चीज खराब ही लगती थी। इसी मूवी में एक सीन है, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड टू सी दैट सीन इन विच शशि कपूर इज अ in that movie only, he is a rich guy. Those rich people are shown as negative. What kind of thought process is this? Why being rich is negative? अच्छा, वो रिच वाले बंदे का सेक्रेटरी आके उसको बोलता है कि सर हमारी तो 20 लाख कमाई और 40 लाख रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स मांगे। Not rubbish. तो अब ये बंदा इतना अच्छा है रिच वाला कि लोन लेता है to pay the tax. Nonsense. This is how this is how the narrative was built over a period of time. Indian cinema का narrative ही हमने ऐसे बनाया था कि लोगों के जहन में एक तरह से कम्युनिज्म घुस जाए, तो हम डेमोक्रेसी में रहते हुए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। So Indian media's ideology is doubtful, like their intellectual level. Indian सिनेमा अब ठीक हो गया है। जब पहले तुम जाओगे थोड़ा और, तो ये हम क्या कहते हैं, वी आर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। हाउ कैन वी बी सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक? नॉनसेंस। द पैथेटिक आइडियाज ऑफ अस, जो जब आजाद हुए ना, वो जो टाइम था हमारा ब्लोसम करने का, वो हमारा बहुत खराब हुआ। एंड बिकॉज ऑफ पैथेटिक आइडियाज ऑफ पैथेटिक सेल्फिश लीडर्स, यू कांट बी अ डेमोक्रेटिक इन सोशलिस्ट पार्टी। How can you be democratic in socialism? Democracy, socialism. You mix in two ideas, and then we amended it and put it in constitution also in preamble. This word, socialist and secular. secular is also not there. Democracy is supposed to be secular anyway. You need not to put that. So that's how we played with this type of people. और हमने गरीब रखते हुए लोगों को ये एहसास दिलाया कि गरीब अच्छा है। वही मनोज कुमार कर रहा है उस पिक्चर में, गरीब अच्छा है। क्यों अच्छा है गरीब? अच्छा ठीक है, गरीब अच्छा है, तो अमीर क्यों अच्छा नहीं? तो इसी में एक लैंडमार्क मूवी जिसने इस ट्रेंड को ब्रेक किया, दैट वाज दिल चाहता है, दैट केम इन 2000। दैट इज द फर्स्ट मूवी स्पोक अबाउट लिविंग रिच। दिल चाहता है, in case you guys have not seen, you can watch it. It's about three friends. This was the first landmark movie in Indian cinema when we started promoting richness. Getting your point? First time people were going to Goa, going to beach, living in resorts, spending money, having beer, having parties. That was the first time. That's why it is a path-breaking movie. तब हम उससे निकल गए कि हीरो जो है वो बस्ती में रहेगा, हीरो की बहन का पक्का रेप होगा, हीरो की माँ कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी, हीरो विलेन कहीं बड़े जगह में रहेगा, बाद में एंड में हीरो जाके विलेन को मार देगा। नॉनसेंस क्रैप। क्या बोल रहे? सब्जी सॉर्ट हो गई। Happy. I don't know where is happiness in all this movie. Where was the happiness? I'm searching. Are you getting your point? Yes, sir. So, love yourself. Be your own brand ambassador. Don't let anyone come to your inner space and make you feel bad. It is your problem if you're doing it. That is what I told you about the toxicity and all. Don't let that happen. Got it? Yes, sir. So far, so good? Yes. Now, another important point is, I hope you guys are enjoying the session. Yes. All of you? Yes, sir. Who is not enjoying? Stand up. Nitesh, sit down. Live in the Movement. This is the life. Live in the वो करते हैं ना वो
श्री श्री रविशंकर करते हैं, बड़े बड़े सदगुरु करते हैं, वो यही तो बात बोलते हैं, लिव इन द। अब मान लो आप तैयारी कर रहे हो, सीरियसली एंजॉय इट। उस भार से और उस प्रेशर से अगर करोगे ना तो इनपुट कम हो जाएगा, और अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो आपको मजा आएगा। तो हम कहते हैं ना कि हमें लाइफ में स्टार देने चाहिए, तो लाइफ में सिर्फ एक ही स्टार मत दो। हमारी क्या फितरत है कि देखो हमने ये हमारी जर्नी शुरू हुई तो हमने अपना मेहनत किया, हम चाहते कि हम लीनियर ही चलते रहे। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा प्रोग्रेस कैसा होना चाहिए, लीनियर, और फिर हम यहाँ पहुंच गए और हमने सफलता को प्राप्त किया और यहाँ पे हमने आपको स्टार दे दिया। तो आपने तो एक ही स्टार दिया ना। अब मैं बताता हूँ उसको कैसे कर सकते हैं। तो लाइफ में स्टेप्स में चलिए, थोड़े चढ़ाव, थोड़े उतार, और हर मुकाम पे अपने आप को स्टार दीजिए। तो इस तरह से आपने अपने आप को कितने स्टार दे दिए, इन्फिनिट स्टार दे सकते हैं आप। दैट इज व्हाट लिविंग इन द मोमेंट इज। आपको क्वांट नहीं आता था, आपको वो समझ में नहीं आना था, आपने मेहनत की, आपको समझ में आ गया, अब आप फटाफट फटाफट कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई, गिव अ स्टार। To the point, you were inhibited, you were not able to speak for 10 seconds, now you spoke 15 seconds, give a star. Now you are speaking 30 seconds, give one more star. So keep giving small stars. Live in the moment. मम्मी के साथ बैठे हो, टीवी सीरियल देख लो, दिमाग मोबाइल में, उसमें मैसेज कब आएगा, क्या हो गया उसको, तो यू आर नॉट देयर। यू आर देयर विद योर मदर physically, when you are not there, so you are not enjoying that moment. तो आप एक्चुअली क्या होगा, इस रट में अगर चले जाओगे आप कभी एंजॉय करोगे। You don't enjoy watching movie with your mother, you will not enjoy that message also when it will come. Getting your point? Yes, sir. You play with your friends, enjoy it. Don't think anything else. Enjoy. You're running, enjoy that. Enjoy the pain. सांस फूल रही है फिर भी मैं चल रहा हूँ, पुश मार रहा हूँ। आपके अनुरोध पर गाना सुना तुमने अभी तक? मजा आया? Live in the moment. समझ में आया? वो प्रेशर चढ़ा रहा है, उसको भी एंजॉय कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। इस एटीट्यूड को बदलने की सब जरूरत है। आप अपने हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए, चीजें बदल जाएंगी, आपकी जीने का तरीका बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका। समझ में आया? Are you living in the moment now? Yes, sir. Sure? Yes, sir. तो लग रहा है होगा, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. So live in the moment, and last, as I told you, similar to this, observe and Absorb. observe. चीजों को अपने अंदर समाने दीजिए, चीजों को समझिए, देखिए, and let them find a space in your heart. न्यू एक्सपीरियंसेस जितने ऐड होंगे, खूब पढ़िए, खूब चीज़ों को समझिए, आसपास के लोगों से बातें कीजिए, कनेक्ट कीजिए, नो देयर आइडियाज अबाउट लाइफ, लव लाइफ, इट्स सो अमेजिंग टू बी अलाइव। नहीं तो कोरोना में निकल रहे थे बहुत, बच्चों का नितेश, हर्ष, Yes, sir. तुम तो निकल गए थे कोरोना में, That's why I'm here. कितनी दूर निकले थे? ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, कोविड था ना। तुम forgetting your name, Yes, sir. नाम क्या है? योगेश. योगेश sir. हाँ, योगेश, समझ गए मेरा बात? तो ये बदलाव आपको ही करने पड़ेगा। You are your own master. आपकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, कोई ब्रांचेस नहीं है, you are the only one. ठीक है? Yes, sir. तो you understood the power of unconscious mind.